Yes, good morning, students. Good morning, good morning, ma'am. Good morning, Sarveshwar, Kassis. Good morning, all of you. Good morning. So, today I'm going to discuss with you the question paper related question. जितने भी question paper में जो भी question आए हैं, जिस भी question में आपको doubt है, we will discuss that today. Because that is also important. If you have covered all the syllabus and you are unable to solve any question which is in your paper, it means something is wrong there. कहीं ना कहीं किसी क्वेश्चन में आपको समझने में डाउट हुई होगी तभी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे होगे सो ऑल ऑफ यू हैव क्वेश्चन पेपर आई मीन इन पीडीएफ और yes students all of you have e-question paper or not Yes, ma'am. because yeah very good so now I am discussing with you question paper from section A. So from question number first onwards, from first to 10, which question that you left or you didn't understand at that time? So tell me students from question number first to 10. मैं आपको आंसर भी बताऊंगी फ्रॉम फर्स्ट टू 10 जितने भी आंसर्स राइट आंसर है वो भी मैं आपसे आपके साथ डिस्कस करूंगी बट आई एम आस्किंग फ्रॉम यू yes here is a question paper in section A from first to 10. Um, question number first is empirical relationship between the three measure of central tendency. So according to you, which one option is correct? आपने कौन से ऑप्शन राइट करेक्ट किए हैं अपने पेपर में कौन सा ऑप्शन लिखे हैं and D. B no your option A is correct. Yes दिव्या very good दिव्या ऑप्शन A is correct जिसने भी आप ऑप्शन A को टिक किया या ऑप्शन A को लिखा है that option is absolutely correct because what was the empirical relationship in your book that is given mode equals to 2 mean minus 3 median right so it means sorry mode equals to that is given there 3 median minus 2 mean. So mode equals to 3 median minus 2 mean. It means according to that answer, your option 1 is correct. Actually आपकी जो बुक में जो दी हुई थी वो किस फॉर्म में दी हुई थी वो मैं आपको बताती हूँ वो आपकी दी हुई थी mode equals to 3 median minus 2 mean. Okay, it is given there mode equals to 3 median minus 2 mean. So when you will transpose like in LHS or RHS, so according to this आपके पास 2 mean होने चाहिए 3 median होने चाहिए mode होने चाहिए तो अगर मैं इसको थोड़ा अगर मैं I mean in different way में मैं लिखूं तो मैं लिख सकती हूँ like 2 mean equals to 3 median minus mode. मैंने क्या करा है मैंने 2 मीन को LHS में मैंने लिखा है एंड मोड को मैंने RHS में ट्रांसपोज किया है ओके so it means the same formula you can write in this way also 2 mean equals to 3 median minus mode so according to this formula only option E is correct and option A is given like this आपकी जो option A थी वो क्या given थी 2 mean equals to 3 median minus mode okay so option first is correct now the second question you have 325 can be expressed as a product of its prime as this. So which one option is correct according to you? Ma'am, C. C, very good. Option C is absolutely correct. जिसने भी option C को किया है, that is the right option. Now question number 3, the largest number that will divide 398, 436 and 542, leaving remainder 7, 11 and 15 respectively is. Now you tell me, do you know that how to solve this question? Question number 3. E. Option A is correct. Very good. So do you know that how to solve? कैसे Yes, आपने ma'am. find किया? Yes, कैसे आपने find किया? Tell me please.
You have to find the largest number. Largest number, it means what you have to find? LCM. HCF. So in this question, you have to find HCF that will divide this, this, and this, leaving remainder. It means from this 398, you have to subtract this 7. From 436, you have to subtract this 11. And from this 542, you have to subtract 15. After getting that value, you have to find the HCF of that three numbers. आपने क्या इस वे में आपने फाइंड किया था? Yes, ma'am. वेरी गुड. सो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 की जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए. इट मीन 17 इज योर राइट आंसर. ओके, जिसने भी 17 को टिक किया है दैट इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज, your fourth question is the pair of equation this and this have a unique solution, infinitely many solution, no solution, or two solutions. So which one option is right? No solution, ma'am. No solution. Very good. So no solution is the right answer. Who said it? किसने बताया अभी मुझे? Ma'am, Krishna. Krishna. Very good, Krishna. So no solution is the right answer. Now question number 5. If P, Q, R and S are in AP, then R minus Q is? Tell me. None of these. None of these. S minus R. S minus R, exactly. So question number 5 का जो आपका right option है वो S minus R है. Why S minus R? Now I am showing you like P, Q, R and S. These are in AP, okay? And the question is asking about R minus Q is equal to, if you are writing R minus Q, okay? So अगर आप R minus Q लिखते हो, it means you are finding here difference. So R minus Q, तो आपकी जो next आपकी जो preceding term होगी, उस preceding term में से आप क्या कर सकते हो? Succeeding term में से आप preceding term को minus कर सकते हो. So आपकी succeeding term क्या है? S. And what is your preceding term? Preceding term is R. So you can write is equal to S minus R, or R minus Q is also equal to, this is S minus R, it is also equal to Q minus P. Here we are finding the difference, and you know that in AP the difference are same. So when the question is asking about R minus Q is equal to what, so it may be S minus R or it may be Q minus P. So option में अगर Q minus P होते, then that option should also be correct. And but in your option it is given S minus R among all these options. So only this option is correct, right? Because Q minus P is not given in your option. So according to that, S minus R is the right option. So आपकी कौन सी option right होगी? आपकी ऑप्शन बी राइट होगी. S माइनस पी इज नॉट पॉसिबल. S माइनस पी हो नहीं सकता बिकॉज आप कभी भी फोर्थ टर्म में से फर्स्ट टर्म को आप माइनस नहीं करते हो फॉर फाइंडिंग द डिफरेंस. S माइनस क्यू ऑल्सो यू कांट डू बिकॉज आप फोर्थ टर्म में से आप सेकेंड टर्म को माइनस नहीं कर सकते. व्हेन यू आर फाइंडिंग द डिफरेंस इन AP, यू आर ऑलवेज डूइंग succeeding term minus preceding term. That is the difference, right? So this option is correct. Now question number 6. Which one option is right? C. No. Now I am asking. I am actually 4. 4. very good. जिसने भी 4 options को बताया है that is the right option because मैंने थोड़ा change किया है. Actually when I had asked like if I asked this quadratic equation has how many degree, then obviously you will tell 2 because quadratic equation की जो degree होती है वो 2 होती है. But if I say or if I ask like by quadratic, so by means 2 and quadratic itself 2 power, right? तो इसकी जो डिग्री होगी वो 2 होगी. सो क्वाड्रेटिक की 2 होगी एंड बाय की 2 होगी. सो 2 and 2 कितने हो गए टोटल? 4.
right? So it means option D is 4. right according to the question. So by quality, आपको ये देखनी है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में क्या आस्क की जा रही है. Is it quadratic, biquadratic, triquadratic? What is being asked in the question? So according to this question, option D is correct. Okay, so 4 is right answer. Now question number 7. Tell me, what should be the right value of this K? Option A. What was your right answer? That you Ma'am, minus 10 upon. 10 by option 3. A, minus 10 upon 3. Actually, option C is correct, 10 upon 3. It's not the minus 10. Which are minus 10 by 3, all of you are getting? Yes, ma'am. All of you are getting minus 10 upon 3 from the of this question? Tell me, students. Which option you will get? Okay, okay. Fine. And this is the right answer. Now the question number 8. See which one option is right? Sine 2b equals to 2 sine base 2 when b is equal to that degree 90, 30, 60 or 0. 0 degree. Which one option is this question number 8? D. Option D is correct. Very good. So this D is the right answer. Very good, Dibya. Now question number 9. Which one option is right? Minus 3. Question number. Students, please tell me what is the right answer. Sum of the zeros. You have to find sum of the zeros of the polynomial this. So you know that sum of the zeros formula minus b upon a. So minus 8 upon 2. So you are getting 4. Sarveshwar. The question is sum of zeros 4. of the polynomial you have to find. You know that the formula minus b upon a. Very good. 4 is the right answer. So b is minus that you will place of this formula, and b is your minus 8. Fine. Minus, it will be plus, and upon 2. 2 is a. So 2 4s are 8. It means 4 you are getting some of its zeros. So your option D is correct of this question number 9. Okay. Now question number 10. Tell me. This is very simple. 1 And why upon are you 52. making mistake? 1 upon 52. Is this the right answer? Yes, tell us, students. Is that the right answer? Divya, very good, Divya. 1 upon 26. 1 upon 26 is the right answer. Why? Because one card is drawn from a Bell Supper 52 playing card. But the question is asking about that is black. Find the probability that you are getting black card. So you know that black card are 26 in number. So 26 upon 52 when you will do. So by 26 upon 52 you are getting. What you are getting, say? Divya has 1 upon 26. 1 upon 26. Yes. So according to this question, 1 upon 26, 2 upon 52 आप करोगे तो 2 upon 52 में क्या find करोगे? 1 upon 26. 1 upon 52 कैसे होंगे, सदेश्वर?
Okay, now option B I am talking about. Option B, question number 11. Question number 11 to till 20. In which question do you have, I mean, at that time, you faced some problems to solve that? Tell me, from question number 11 to till 20, in which question there were some problem? किस क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आई थी या जिस क्वेश्चन को आपने समझा नहीं होगा? टेल मी स्टूडेंट्स, मैं सारे क्वेश्चंस नहीं बताऊंगी आपको, पर जिस क्वेश्चन में आपको डाउट है दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन ओनली आई विल एक्सप्लेन इट. मैम क्वेश्चन नंबर 17. Question number 17. Okay. Is any other? Please students see your screen properly and tell me which one question that you have doubt. Is any other from this question number 11 to till 20? Question number 19. Very good, Kasis. Question number 19. Okay. So question number 17 and 19, I'm telling you. So in the question, sum of its zeros are given minus 1 upon 4 and product of its zeros are given 1 upon 4. So sum of its zeros and product of its zeros are given in the form of minus 1 upon 4 and 1 upon 4. What we have to find in this question? We have to form the quadratic polynomial. So as we know that the formula is x square minus alpha plus beta x plus alpha into beta. This was the formula that I told you to form a quadratic polynomial. So x square, what is alpha plus beta? Your sum of its zeros is given minus 1 upon 4. So you can place this value here, minus 1 upon 4x plus alpha into beta is 1 upon 4. Minus minus plus x upon 4. So here you can take LCM. 4 आपने LCM लिया है. Now 4x square plus x plus 1 equals to 0. When you will do the cross multiplication, you will get this value 4x square plus x plus 1 as quadratic polynomial. So this is your right answer. And this is the required answer as per our question. Did you understand, Krishna? Yes ma'am. So इसमें आपको क्या डाउट क्या आई थी? Tell me please. What kind of doubt that you faced? क्या किस टाइप का समझ में नहीं आया? क्वेश्चन समझ में नहीं आया? You know, मैम 1 upon 4 था ना. you are reading it. ओके ओके, हाँ फाइन. देन मैंने यहाँ पे क्या किया, एलसीएम लिया है. मैंने पहले क्या किया, माइनस माइनस प्लस किया 1 इंटू एक्स एक्स अपॉन 4. फिर एंड देन दिस इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो हमने क्या किया, पहले उसको एलसीएम लिया, बिकॉज हमें किस फॉर्म में लिखनी होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. सो कोई ये आपकी फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होनी चाहिए. फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख भी सकते हैं, दिस इज ऑल्सो द राइट आंसर, बट हमें एक्चुअली इस फॉर्म में लिखनी होती है. तो हमने क्या करा, 4 एलसीएम ले लिया एंड आफ्टर गेटिंग दिस 13 एंड 15. ओके दिव्या, मुस्कान. सो हमने क्या किया, एलसीएम लिया एंड जो आपकी न्यूमरेटर फाइंड हुई है दैट इज योर फाइनल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. जो आपकी बनेगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो क्या होगी, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1. बिकॉज आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4 इंटू 0 क्या हो जाएंगे, इक्वल्स टू 0. राइट. क्वेश्चन नंबर 19. Question number 19 is the equation I'm showing. The equation 2x square plus kx plus 3 has two equal roots. Okay, this is the equation, quadratic equation, and it is given in the question. It has two equal roots. Then find the value of k. आपको k की वैल्यू बतानी है. So it is actually some hint is given here. It has two equal roots. So for two equal roots, your डिस्क्रिमिनांट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0. जब भी टू इक्वल रूट्स होते हैं तो आपकी डिस्क्रिमिनांट 0 होती है. मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था, चैप्टर 4 में आपको बताया था मैंने.
So you can write the discriminant for equal root. The discriminant is 0. So what is the discriminant formula? The equation, quadratic equation. So b is k and your c constant value is 3. So by putting all the value of this b, a and c here, b की वैल्यू कितनी है k, तो हमने k प्लेस किया है, b square minus 4ac. So k square minus 24 equals to 0. When you will transpose this, it will change into plus sign. So 20 plus 24, k square equals to plus 24. It means what is the value of k? k की वैल्यू क्या होगी? आप स्क्वायर लिखते हो तो आप किस फॉर्म में लिख सकते हो? 2 into 2 into 2 2 is 4, 3 is 12, 12 2 is 24, right? So this is in pair. ये pair में है, तो इसको आप रूट के बाहर लिख सकते हो. Just you have asked this question. Now I'm asking, what was the problem? Just I'm asking from you. Yes, Cassis, are you getting my voice? Please tell me. ओके ओके फाइन. सो जब भी स्क्वायर में आपकी 24 होती है, स्क्वायर को रिमूव करनी है, तो देन नथिंग यू हैव टू डू, आपको इसकी एलसीएम लेनी है. हमने इसकी एलसीएम फाइंड की, 2 2 is 4, 3 is 2, हमने सारे इसके फैक्टराइज जो भी इसके फैक्टर्स थे हमने इसको रूट में लिखे. एंड जब हमने इसको रूट में लिखे, जो भी पेयर होगी इसको आप बाहर लिख सकते हो. जो पेयर नहीं बन रही है, यू कैन राइट इन रूट. सो लाइक दिस यू कैन फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ दिस 24. ओके. And when you will remove this square, it will come into plus and negative both the sign, दोनों साइन फाइंड होंगी. अगर आप इसको सिर्फ 2 रूट, तो आपकी 0.5 marks will be deducted from your answer. That you must remember. Now I am telling you, when the two distinct roots are real, okay, it is given in real roots, then जो b square minus 4ac होंगे, that will be greater than 0. If it is given in your question, it has to equal root equals to 0, and when it has no real root, then you can write b square minus 4ac is less than 0. So आपको like ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को अप्लाई करनी है. क्वेश्चन में जब भी जो भी दी हुई होगी, अगर रियल रूट दिए हुए होते हैं तो आपको ग्रेटर देन 0 लिखनी है. इक्वल दिए होते हैं तो आपको इक्वल करनी है. नो रियल रूट दी हुई होती है, देन यू हैव टू राइट डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0. ओके. एंड जस्ट आपको इसके बाद इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. Question number 13 and 15. Yes, question number 13. 13, check whether 6 power n. I'm showing you question. This is your question. Check whether 6 power n can end with the digit 0 for any natural number n. I have told you this question. 4 power n, 6 power n, 8 power n, whatever the number, whatever the question is given, कोई से भी यहाँ पे वैल्यू गिवन होती है, आपको चेक करनी क्या उसकी डिजिट, अगर 6 पावर n आप लेते हो और वो n आपकी नेचुरल, तो क्या अगर आप उसकी पावर की वैल्यू फाइंड करोगे तो क्या वो 0 से एंड हो रही है, आपको बस ये चेक करनी है. ओके. You know that when any number is ending with the digit 0, it means it is divisible by 2 or 5. या तो वो 5 से डिविजिबल हो सकती है, तो 2 से डिविजिबल हो सकती है, और that could be also divisible by 10. So वो 10 से भी divisible हो सकती है. So if any digit has a last digit 0, अगर वो digit last digit 0 से end हो रही है, that means it must be divisible by 10. तो वो 10 से definitely divisible होगी. And we know that 10 की जो factor है वो क्या होगी, 2 into 5. If we are taking 100, so 100 की भी फैक्टर करोगे, देन उसमें 2 and 5 फाइंड होंगे. सेम अगर 1000 की भी फैक्टर करोगे, तो अगेन यू विल गेट एज नंबर इन फैक्टर 2 and 5. It means that number must be divisible by 2 as well as 5. दोनों से divisible होनी चाहिए. Say this 6 power n, 4 power n, 5 power n can end with the digit 0 or not.
So here 6 power n, you are writing 2 into 3 power n. So 6 power n is divisible by this 2 power n, 2 से divisible हो रही है, but it is not divisible by 5. 5 से तो divisible नहीं हो, 0 अगर उसके लास्ट में वैल्यू होते डिजिट होते हैं तो 2 एंड 5 से दोनों होने चाहिए. So 2 से डिविजिबल हो रही है, 5 से डिविजिबल नहीं हो रही, बिकॉज इसकी फैक्टर क्या है, इसकी फैक्टर है 2 into 3. So it doesn't have 5 as prime factor, so it doesn't end with the digit 0. You can write hence 6 power n cannot end with the digit 0. Or you can find out by another one method, like if I write 6 power n, okay, for any natural number, for any natural number that you can take 1 2 3 dot dot dot, right? So 6 power 1 I am doing. 6 power 1 is 6. 6 power 2, 36. 6 power again. So by observing these all values, what we are observing here, when we are doing 6 power 1, we are getting 6. 6 power 2, 36. It means it is ending with the digit 6, not 0. So here also you can write, we are concluding that 6 power n is ending with the digit 6. It means it can't be end with the digit 0 for any natural number n. So that also reason you can write. Muskan, did you understand now? Yes, ma'am. Find the root of the quadratic equation. It is very simple. And yes, Muskan. So question number 15, I am telling you, find the root of the quadratic equation. आपको या तो इस quadratic equation की root find करनी है, it means zeros find करने हैं, आपको factorize करनी है by splitting the middle term, okay? Or you have to factorize this quadratic equation. So I had given you two questions. Why? Because one is in root and another one is not in root. So I thought कि अगर आपको root के questions को नहीं factorize करने में problem होंगे तो आप simple question कर सकते हो. So but in your paper में तो ऐसा कोई आपको I mean differentiate किया हुआ नहीं होगा कि आप ये नहीं कर पाओगे. सो आपको दोनों मालूम होना चाहिए. रूट की जब वैल्यू जब भी कोई वैल्यू या फिर जब भी कोई इक्वेशन रूट में गिवन होते हैं वो दिखने में लगते हैं, आई मीन it seems to be very hard, but actually it is not hard, okay? So there are two questions in this exercise, sorry in this question, and you have to do any one. हमने और लिखा है तो आपको दोनों में से एक करनी थी. So you have to find here root of the quadratic equation. आपको इसको factorize करनी है, simply you have to factorize, okay? So the question is 3x square minus 2 root 6 plus 2. When you will multiply first term and the last, okay, numerical value जब इसकी आप multiply करोगे, so 3 2 is 6, you are getting 6. It means जो middle term है, right, आप उसको किस form में to root 6, you will get 6 as the first term and the last term. So इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हो 3 and 2 को, तो you are getting 6, and first two terms को भी अगर मल्टीप्लाई करोगे you will get the same answer. So हमने क्या करा है, middle term को हमने split किया. So we are splitting the middle term as root 6x minus root 6x. So this is 2 root 6x and multiply करने पे इसकी वैल्यू 6 फाइंड हो रही है. Now by separating both the equation, equation, we are getting here as common root 3x. So root 3x कॉमन लिया हमने. अगर आप 3 में अगर आप 3 से root 3 को कॉमन लेते हो तो आपकी जो रेस्ट वैल्यू क्या होगी, root 3 होगी, बिकॉज root 3 into root 3 क्या होंगे, 3 होंगे. So हमने इसमें root 3 कॉमन लिया, because why we are taking this root 3 as common, because in this root 6 there is, अगर root 6 को आप लिखते हो तो क्या लिखोगे, root 3 into root 2. It means root 3 is common. So हमने दोनों से root 3 लिए, and x दोनों के पास लिख रहे हैं तो हमने x को भी कॉमन लिया है. Here root 3x is left and root 3x we have already taken here, so root 2 is left.
So root 3 minus root 2. Similarly, here also you can take, so root 2 is common here. So हमने root 2 को common लिया है and root 3x minus root 2. Now you can write this common root 3x minus root 2. तो हमने उसको common लिया and what is left here? Root 3x minus root 2. Okay. So you have two roots and this is equals to obviously 0. राइट यहाँ पे क्या होगी 0 की इक्वल होगी सो रूट 3 माइनस रूट 2 इक्वल्स टू 0 एंड रूट 3x माइनस रूट 2 इक्वल्स टू 0 बोथ तो दोनों की सेम वैल्यू है सो दो रूट फाइंड होंगे आपकी क्वाड्रेशन की and it is quadratic equation so obviously there will be two roots that you will get so under root 2 upon 3 and under root 2 upon 3 it means same value find हो रही है अगर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होती है तो आपकी अगर वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होंगे तो आपकी टू रूट फाइंड होगी ओके तो हमने इसलिए यहाँ पे टू रूट्स फाइंड किए हैं तो सिमिलरली आपको इधर भी सेम दूसरी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करनी है 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 सो फर्स्ट एंड लास्ट को आप जब मल्टीप्लाई करते हो तो 6 2 जा 12 so this middle term you can split in the form of 3 and 4 and 3 4 3 are 12 and 4 minus 3 when you will do 4 minus 3 you will get 1 right so you can write minus 4x plus 3x why I have written this minus 4x I mean हमने 4x पहले क्यों लिखा but because we need this minus 1x so minus 1x कब आएंगे जब आप इसको लिखोगे minus 4 plus 3 if I am writing like minus 3 plus 4 we will get here 1 but अगर इसको solve करोगे आप then you will get minus 1 so हमें minus 1 चाहिए in the middle term so हमने इसको middle term में split करा है minus 4x and plus 3x के form में split किया है similarly you will take here you will factorize so you will take the common आप इसमें से दोनों को आप डिवाइड करोगे पहले इन दोनों में से जो भी कॉमन होंगे कॉमन लोगे एंड देन उसकी टू रूट्स फाइंड करो यस मुस्कान आई मीन व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन क्या आपको फैक्टराइज करने नहीं आते अगर फैक्टराइजेशन में प्रॉब्लम है देन हम वन डे कंप्लीटली फैक्टराइजेशन या फिर सिंपली जो आपकी डाउट्स है ओके मुस्कान here how to do the factorize and how to find the roots of this quadratic equation this is the quadratic equation 6x square minus x minus 2 when it is given only x it means 1x is given okay so first and last को multiply करते हैं हमने first and last को जो multiply करा we are getting 12 6 2 is 12 when you will take the LCM of this 12 so you can write out 3 4 is 12 और कम्प्ली आप लिखोगे तो 3 4 is 12 it means हमें क्या करनी है मिडिल टर्म आई मीन जो मिडिल टर्म क्या है वो 1x दी हुई है सो 1x को इस तरीके से आपको उसको स्प्लिट करनी है मल्टीप्लिकेशन 12 होने चाहिए बट उसको प्लस या माइनस करने पे उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए 1 आनी चाहिए राइट सो व्हेन वी विल डू 4 plus 3 we will get 7 but we don't need here 7 we need 1 अगर 4 minus 3 करते हो तो आपको कितनी वैल्यू फाइंड होगी 1 फाइंड होगी और हमने कहीं हमने फैक्टर फाइंड किया है तो नो नीड टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट सो हियर हमने 1 को किस फॉर्म में लिखा है -4x प्लस 3x के फॉर्म में लिखा है स्प्लिट करने के बाद -2 एज इट इज लिखा है सो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को एज इट इज लिखनी है और इसको आपको स्प्लिट करनी है ठीक है मिडिल टर्म को स्प्लिट करनी है नाउ व्हाट इज कॉमन हियर 2 is common and x is also common so 2x I have taken common 2 is a 6 so 3 and 1x is left so 3x which is left so you can write in bracket minus 2x you have taken common so अगर आपने इसमें से 2x कॉमन ले लिया है then what will be left 2 will be left right so here 3x minus 2 again similar जैसे आपने इसमें से कॉमन लिया है similarly you will check here also is there any common number value so there is no any common value तो कोई भी common value नहीं होती है then you can take 1 okay as common so 3x minus 2 same आप 3x minus 2 left होंगे तो 3x minus 2 you can write in bracket now again this thing completely अगर मैं इसमें से देखूं दोनों क्या कॉमन दिख रही है मेरे को कॉमन दिख रही है 3x minus 2 so 3x minus 2 3x minus 2 is common then what is left
in between. So it is left here 2x. So I have written here 2x, and here it is left 1. So you can write plus 1. So this is the value of this quadratic equation, and this is equals to 0. You can equate with this 0. तो आप 0 को equate करोगे, then you will, after that you will get the value of this root of this quadratic equation. So 2x plus 1 equals to 0. 1 को transpose किया, it will change into minus, and to multiplication में तो वो किधर आएंगे, division में आएंगे. So minus 1 upon 2 is the required first root of this quadratic equation. Similarly, you will find the root from this equation also. So 3x minus 2 equals to 0. Firstly, you have to transpose this 2. It will change into plus sign. And आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपको 3 को भी ट्रांसपोज करनी होगी, एंड 3 इज इन मल्टीप्लिकेशन. ये प्रोडक्ट में दी हुई है, तो ये किधर आएगी, डिवीजन में आएगी. जब भी आप इसको ट्रांसपोज करते हो, मल्टीप्लाई डिवीजन में चेंज होते हैं, एंड एडिशन सब्ट्रैक्शन में चेंज होती है. ठीक है. So you are getting 2 upon 3 and minus 1 upon 2. That is your zeros, or you can say root of the quadratic equation. Now you got it, Muskan? Say Yes, or no, ma'am. Muskan. Okay. Yes, students. So these are the question, okay, from section B. So is any other question? क्या कोई और भी question है इस section में? Can I explain that? Okay, very good. Now you have section C. Okay, you have section C. This is your question. Now tell me from 21st to 25. Do you have any doubt? 28. Fine. Any other? 26. You can, I'm showing you the question. So you can ask here. 28. But okay, Dibya, 28 I'll discuss here. So you can see. अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, फर्स्ट क्वेश्चन आई एम टेलिंग आपको सिंपली फाइंड करनी थी 21. Okay, 6 firstly I am discussing. Okay. 26 question number I am discussing. Question number 20 is the